to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Urvashi Rautela kisses Deepika Padukone as she bumps into the Pathaan actress in a flight. Dubbing in Hindi was a little challenging, says Rashmika Mandanna. Rudrani Chattoraj chats with cast of She-Hulk attorney at law. दीपिका पादुकोण और उर्वशी रौतेला के बीच है गहरा दोस्ताना. उर्वशी रौतेला ने दीपिका पादुकोण को किया किस. दीपिका पादुकोण और उर्वशी रौतेला की पिक्चर हुई वायरल. दीपिका पादुकोण और उर्वशी रौतेला अपनी एक लेटेस्ट पिक्चर को लेकर इंटरनेट पर हर तरफ छाई हुई हैं. दोनों की ये पिक्चर एक फ्लाइट के अंदर की है, जिसमें दीपिका पादुकोण को देखते ही उर्वशी रौतेला इतनी एक्साइटेड हो गयी कि उन्हें चीक्स पर किस कर लिया. Reportedly, both the actresses were flying back to Mumbai from Dubai, where they bumped into each other on a flight. दोनों की इस पिक्चर को उर्वशी रौतेला के ब्रदर यशराज रौतेला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था, जिसके बाद कई फैन क्लब्स ने भी इस पिक्चर को अपने पेज पे रीशेयर किया और देखते ही देखते within no time दीपिका पादुकोण और उर्वशी रौतेला की ये किसिंग फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. In the picture, Urvashi Rautela can be seen wearing a black outfit, while Deepika Padukone opted for a denim jacket. फिलहाल on the work front, Deepika Padukone शाहरुख खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म पठान में बिजी हैं. Recently, Deepika Padukone ने फिल्म के डबिंग सेशन की एक पिक्चर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए फैंस को एक एक्साइटिंग अपडेट दी थी. ये पिक्चर डबिंग स्टूडियो के अंदर की है. पिक्चर में माइक्रोफोन, स्क्रिप्ट, मार्कर के साथ कॉफी मग भी नजर आ रहा है. The actress captioned the post as #WIP #Pathaan. वैसे रूमर्स हैं कि मेकर्स फिल्म का ट्रेलर भी जल्दी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म की रिलीज में अब लगभग 3 मंथ्स के आसपास का ही समय बचा हुआ है. पठान के साथ शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण जहां बिग स्क्रीन्स पर रीयूनाइट कर रहे हैं, वहीं फिल्म में जॉन अब्राहम एंटागनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं. And the movie is set to release on January 25th, 2023 in Hindi, Tamil and Telugu. इसके अलावा दीपिका पादुकोण को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के लिए अप्रोच करने के रूमर्स भी तेज हैं. हालांकि फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इस तरह की न्यूज पर रिएक्ट किया है. अयान मुखर्जी ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में पार्ट 1 में दीपिका पादुकोण के कैमियो को डिनाई किया है. अयान मुखर्जी का कहना है कि जिस पार्ट को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि इसमें दीपिका पादुकोण है, वो एक डार्क सीन है जिसमें कैरेक्टर का फेस रिवील नहीं किया गया है. ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है. अयान मुखर्जी की बातों से क्लियर हो जाता है कि दीपिका पादुकोण ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का हिस्सा नहीं थी और न ही 2 का है. रश्मिका मंदाना ने शो किया अपना गूफी साइड. अपने क्रू के साथ ग्रूव करते नजर आई रश्मिका मंदाना. रश्मिका मंदाना को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा? रश्मिका मंदाना ने बहुत कम ही समय में लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है. कन्नड़ एंड तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी पोजीशन मजबूत करने के बाद अब रश्मिका मंदाना बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपकमिंग फिल्म गुड बाय के साथ डेब्यू करने जा रही हैं. लेकिन इस फिल्म की रिलीज से पहले रश्मिका मंदाना ने अपने सभी फैंस को एक क्यूट सा सरप्राइज देते हुए अपना एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें वो फिल्म के लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग पर डांस करती देखी जा सकती हैं. इस वीडियो में उन्हें उनके क्रू के साथ गणेश आचार्य ने भी फ्लोर पर ज्वाइन किया है. इसे शेयर करते हुए शी कैप्शन्ड हर पोस्ट अ लिटिल सरप्राइज, grooving to my recent favorite with the best crew #goodbye. रश्मिका मंदाना का ये क्रेजी साइड देख वाकई उनके फैंस को काफी अच्छा लगा.
और उनमें से कुछ ने पोस्ट पर रिएक्ट किया है. One of her fans commented, "Amazing." Another said, "Wow." एक और फैन ने मेंशन किया, "Nice." वैसे गुड बाय इज सेट टू हिट द स्क्रीन्स ऑन October 7th. इस फिल्म को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है. लेकिन क्या आपको पता है कि गुड बाय के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट कर रही रश्मिका मंदाना को बॉलीवुड में क्या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा था? तो वो थी डबिंग इन हिंदी. जी हाँ, इस बात को रिवील करते हुए रश्मिका मंदाना ने बताया कि डबिंग इन हिंदी was a little challenging for her. She said, "Dubbing is a very difficult task for me. All the time and in all the languages. It is the hardest thing that I have to do for a film. For me, dubbing in Hindi was a little challenging, but at the same time, I also learnt a new language. I have one more language in my kitty." Interestingly, this is not the only Hindi film in Rashmika Mandana's kitty. She will also be seen sharing screen space with Siddharth Malhotra in Mission Majnu, and she also has collaborated with Ranbir Kapoor for Animal, which is being helmed by Sandeep Reddy Vanga. ऐसे में अब बस रश्मिका मंदाना की फिल्मों की रिलीज का इंतजार है. लेकिन तब तक अपने फैंस को कैसे हुकअप करके रखना है, ये रश्मिका मंदाना अच्छे से जानती हैं. You really get to see women in, I think, a more varied light, and I think it's more representative of the world that we live in. Pug is actually Adrian Chase in another character's form. So they're all tied together in my world. It's all the same character. And you didn't know that Renée Goldsberry played a lawyer that was actually assaulted by Josh one day on a show called The Following. Hello, everybody. I'm Rajani. And welcome to Speak Easy. My guests today are very special. Also, if you ever need a lawyer, they'll be the people that you'd want to have in your team. I mean, they've been dealing with superheroes. I'm sure they can solve your case. I'm talking about the very talented Renée and Josh. Welcome to Zoom TV and welcome to India. Thank you. Thank you. Been great. Thank you for having us. Like I said, I do believe what I said. I think human cases will just be too easy for the two of you. After all that you've been dealing with, obviously, I'm going to start with Renée. Renée, they said that from the comics, the first difference starts that there is a definitive, there's a defining female gaze, female lens from which the show is also being told, and that is why you see the differences, and that is so interesting, right? One thing, if you've seen the episode, we'll know that the rivalry between the two women here have obviously not been exploited in that manner. And you see like there is a certain kind of competitiveness, but there's also this a bit of appreciation for what the other person does. And I think that's beautiful. Renée, what do you think about that? And of course, the fact that you finally have a show where your character's being shown from the female lens, taking a very, very U-turn from what the usual comics are, which are usually the male gaze. I think it's wonderful because you could stop at, well, it's a show about She-Hulk. So there's one powerful woman on there, and we've checked the box. And I think what's really great about what we've done in this world is there are so many different kinds of powerful women in this show. I mean, from the villains through, the quote unquote sidekicks to the rival. I mean, you can look across the landscape and see very different, you can see powerful women in very different forms. And they don't always have to see eye to eye and get along. And we would be lying if we said that they're not sometimes threatened by each other. So watching them kind of have their battles, some of them really outright obvious, like Titania and She-Hulk, and some of them being more subtle, like what's happening between Mallory and Jen. We really get to see women in, I think, a more varied light. And I think it's more representative of the world that we live in. Absolutely. Josh, I'm sure the little bit of on-screen legal thing that you've done in Arrow must have always come a little handy. I talked that about Renée as well, right? The Good Wife. I mean, I love The Good Wife as a show. Is this a coincidence? You guys come with legal on-screen experience already. No, it's not. No, you didn't. Oh, see, you didn't know that Pug is actually
Adrian Chase in another character's form. So they're all tied together in my world. It's all the same character. And you didn't know that Renée Elise Goldsberry played a lawyer that was actually assaulted by Josh one day on a show called The Following. It's one of those things. We always get a job doing a job. Everything we do feels a bit like an audition, and we needed the experience, I think, to come into this universe playing a lawyer when Marvel took this turn, and I'm grateful for it. And DC and Marvel finally, there you go, a unifying factor. Who would have Finally, thought? this is what it took. She-Hulk. We finally married the two. It took She-Hulk. Thank you so much. Lovely chatting with the two of you. Bye. Coming up on the show, Aishwarya-Rai Bachchan and Trisha's BTS picture in their majestic avatars goes viral. ऐश्वर्या-राय बच्चन की खूबसूरती पर फिदा हुआ सोशल मीडिया। पोन्नियिन सेल्वन 1 से ऐश्वर्या-राय बच्चन की न्यू पिक्चर हुई सोशल मीडिया पर वायरल। ऐश्वर्या-राय बच्चन और त्रिशा कृष्णन के फेस ऑफ सीन की पिक बनी टॉक ऑफ द टाउन। ऐश्वर्या-राय बच्चन का पोन्नियिन सेल्वन लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हर जगह लोग उनके लुक की बात कर रहे हैं। नेटिजन्स ने ऐश्वर्या-राय बच्चन की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। ऐश्वर्या-राय बच्चन looks absolutely stunning in a red ensemble in the picture, which is trending big time on social media. वहीं उनके एक्सप्रेशंस की भी काफी तारीफ की गई है। ऐश्वर्या-राय बच्चन के लुक और एक्सप्रेशंस की तारीफ करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "A full moon with fire. Those eyes speak a lot." Another social media user wrote, "I forgot to breathe. Aishwarya Rai, I am speechless. Just look at her. The styling too." यही नहीं, फिल्म मेकर मणि रत्नम्स पोन्नियिन सेल्वन 1 में त्रिशा कृष्णन भी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ नजर आएंगी और इस फिल्म में उनका और त्रिशा कृष्णन का एक अल्टीमेट फेस ऑफ सीन भी है, जिसे फिल्म की हाईलाइट माना जा रहा है। ऐसे में फिल्म में त्रिशा कृष्णन और ऐश्वर्या राय बच्चन एक दूसरे के दुश्मन हैं और त्रिशा कृष्णन ने एक इंटरव्यू में बताया कि इसीलिए फिल्म के डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि वो और ऐश्वर्या राय बच्चन ऑफ कैमरा अच्छे दोस्त बने। She said, "I fortunately got to meet her and interact with her on the day 1 of my shoot. She is beautiful inside out and I don't even need to say that. The thing is, this was challenging because we are not supposed to like each other too much in this film, but we got along pretty famously on set. There were times when Mani sir would come and say, 'Listen, you guys are talking too much. Stop talking. I can't have this camaraderie for my scene.'" वैसे रिसेंटली जब ऐश्वर्या राय बच्चन को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो वहाँ भी उनके लुक को काफी पसंद किया गया। She was seen sporting a white long jacket and a pair of black trousers. She completed her look with a pair of shades and sneakers. Well, ऐसे में फैंस को बेसब्री से इंतजार है ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 1 का। एटली के बर्थडे सेलिब्रेशन की एक इनसाइड पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें शाहरुख खान के साथ साउथ सुपरस्टार थलपति विजय और एटली भी नजर आ रहे हैं, wherein all three are dressed in black. इस पिक्चर को एटली ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "What more can I ask on my birthday? The best birthday ever with my pillars. My dear at IMSRK and Ennoda Annai Ennoda Thalapathy at actor Vijay." इस पिक्चर के सामने आते ही एक बार फिर शाहरुख खान स्टारर जवान में थलपति विजय के कैमियो को और हवा मिल गई है।
मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने दिया लेट कॉमेडियन टर्न एक्टर राजू श्रीवास्तव को ट्रिब्यूट। रिसेंटली अपने ब्लॉग में बिग बी ने रिवील किया कि उन्होंने हॉस्पिटल में राजू श्रीवास्तव के लिए एक वॉइस नोट भी भेजा था, जिसे सुनकर एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें भी खोली, लेकिन फिर हमेशा के लिए सभी को अलविदा कह दिया। क्या करण जौहर ने अपने चैट शो के लेटेस्ट एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ किया है इशारा? अपने शो के पॉपुलर रैपिड फायर राउंड के दौरान करण जौहर भावना पांडे को सजेस्ट करते हैं दैट चंकी पांडे माइट बी हैविंग अफेयर्स, जिस पर जवाब देते हुए वो कहती हैं कि शी डजंट नो अबाउट इट एंड दैट इवन इफ ही इज हैविंग वन, इग्नोरेंस इज ब्लिस। बता दें, भावना पांडे एंड चंकी पांडे टाइड द नॉट इन जनवरी 1998 और दोनों की 2 डॉटर्स भी हैं। संभाल आराम से। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र अपनी रिलीज के बाद भी कंसिस्टेंटली न्यूज में बनी हुई है। फिल्म के बजट को लेकर आ रही कई सारी स्पेकुलेशन के बाद रूमर्स हैं कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने फिल्म के हाई VFX कॉस्ट के चलते अपनी फीस छोड़ दी है। हालांकि रिसेंटली इन खबरों को एड्रेस करते हुए फिल्म मेकर अयान मुखर्जी सेड, "The truth is that the film has been made because of a lot of personal sacrifice. It is true that the amount that Ranbir would make as a star actor, he didn't take anything for the making of Brahmastra. This is a very, very big thing because it would not be possible to make this film." He added about Alia Bhatt, when she joined the film, this was 2014. She only had a couple of releases. She isn't the star that she is today. The amount that was fixed for Alia in this film was not a very big amount. But even that small amount, by the time we completed the film, even Alia said that all of it has gone into the making of the film. Lot of allegations. Jacqueline, would you say something? Would you say something? 200 crores एक्सटॉर्शन केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के बाद रिसेंटली EOW के ऑफिसर्स ने उनकी स्टाइलिस्ट लेपाक्षी एल्लावड़ी को इंटेरोगेट किया है। रिपोर्टेडली इस इंटेरोगेशन में लेपाक्षी एल्लावड़ी ने सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस को लेकर कई रेवलेशंस किए हैं। जैकलीन फर्नांडिस की स्टाइलिस्ट ने बताया कि जैकलीन फर्नांडिस के फेवरेट क्लोथ्स लाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें 3 crores हैंड ओवर किए थे।